Good evening, ladies and gentlemen. You just heard it for yourselves. Chants of Modi, Modi resonating in the Bengal bastion of Mamata Banerjee. Just 10 years back, BJP had managed to win only 2 seats where in the 2014 Lok Sabha elections. Today, ahead of the 2024 general elections, Modi ki leher seems to have breached the Trinamool Congress citadel of Bengal. So what really led to the people of Bengal embracing Modi as their own parivar? Let's get you a glimpse of the changing political scenario. The women of Sandesh Khali had to protest on the streets of Sandesh Khali, alleging that their tormentor, now suspended Trinamool Congress Neta Sheikh Shah Jahan, was being shielded by the state. They felt betrayed, and it took 56 days to arrest, in this case, Sheikh Shah Jahan. And 61 days later, he has been handed over to the CBI today. After being pulled up by the High Court, not once or twice, but 3 different times. But today, the Betis of Sandesh Khali feel that justice is finally in sight. The victims of Sandesh Khali met Prime Minister Modi as he held a Mahila rally in Barasat, merely 80 kilometers from where they were allegedly tortured, raped and traumatized. They narrated their ordeals to their own Prime Minister Narendra Modi and detailed the atrocities that they had to face. It is said that, like a father figure, Prime Minister Modi listened to them and felt and shared their pain. With a shoulder to cry upon, these victims of Sandesh Khali got emotional and sought justice from the Prime Minister. Listen into them finally say that in Modi they have a ray of hope. ওদের মতো করে আমাদের ভুল পথে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে রাস্তার মধ্যে আটকে রাখা হয় এবং আমাদের মোদিজির সাথে আমাদের দেখা করতে না দেওয়ার জন্য এই প্ল্যানটা করেছিল, সেটাই ওরা সফল হয়েছে। আমাদের সন্দেশখালীর মা বোনেরা কোনো দিন যাতে কারো সহযোগিতা না পায় সেই জন্য ওরা এই চালটা খেলেছিল। আমাদের সন্দেশখালী মা বোনেদের যেসব অত্যাচার হয়েছে সমস্ত কিছুই ওনাকে বলেছি আমরা। প্রধানমন্ত্রী কোনো আশ্বাস? হ্যাঁ, অবশ্যই উনি বলেছেন আমাদের পাশে থাকবেন, সন্দেশখালীর দুর্গাদের পাশে। उन्होंने आश्वास दिया है कि हम कुछ करेंगे, आप लोगों के देख रहे हैं, आश्वास दिया है हमने, उसमें आश्वस्ति में हम खुश हैं। आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, हम लोगों को तो सुकून मिला है, उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। उनके आशीर्वाद भी लिया हम लोगों ने, पैर छू के उनके आशीर्वाद भी लिया है, हमें बड़ा सुकून मिला है। हाँ, हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है, बोल रहा है आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है अब। This was the Prime Minister's second trip to West Bengal in less than a week. The Prime Minister pulled no punches when he lashed out at the Bengal government, calling it a Mahila Virodhi Sarkar. He lashed out at the alleged state patronage extended to Sheikh Shah Jahan. He also underlined that Nari Shakti is critical to ensure a Viksit Bharat, which the BJP is working towards. Listen in. यहाँ की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। साथियों, भाजपा के इन प्रयासों के बीच इंडिया अलायंस क्या कर रहा है, ये भी देश को जानना जरूरी है। केंद्र की भाजपा सरकार
बहन बेटियों के हित में जो भी प्रोग्राम बनाती है, इंडी गठबंधन की राज्य सरकारें उस पर ब्रेक लगा देती है। भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। But why do women consider Prime Minister Modi to be their parivar? Perhaps this news our fact check can explain. 69% of the 306.4 million loans were given to women under the Pradhan Mantri Mudra Yojana. 84% of the 209,000 loans sanctioned under Stand Up India were also given to women. There were almost 10.01 crore women beneficiaries registered under the Poshan Tracker. 49% of the total Ayushman Bharat cards have been given to women, while nearly 64 lakh completed houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana were solely in the name of women. This perhaps explains how Prime Minister Modi has always championed the cause of Nari Shakti and called out those who have betrayed them. Not only was the Trinamool Congress Sarkar flayed by the Prime Minister, they got a tongue lashing from the courts as well. The High Court slammed Bengal police for what it called their totally biased conduct and said that every attempt is being made to delay the probe and protect Sheikh Shah Jahan. Then the Trinamool Congress government moved the Supreme Court but got no relief there either. It was only after that and a delay of over 27 hours that they decided to hand over Sheikh Shah Jahan to the CBI. Today, the Trinamool Congress and its India Alliance partners dodged the question of shielding Shah Jahan and ask, why isn't the Prime Minister fighting for the women in Manipur? Listen in to the whataboutery in their statements. आके वो नारी शक्ति का बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि पिछले बार स्वाधीनता दिवस के दिन क्यों बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट था उसको रिहाई करके उनको माला देके वरण किया गया था। वो ये नहीं बोलेंगे क्यों मणिपुर में एक बार भी जाने का टाइम नहीं मिला, जहाँ पर औरत को रेप करके वहाँ पर नेकेडली पैरेड करवाया जा रहा है। राज्य सरकारों को उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा है, कोई विश्वास नहीं रहा है, और ये देश के लिए बहुत खतरे की घंटी है। केंद्र सरकार को इनकी छवि सुधारने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। देखिए, संदेश खाली में जो आरोप लगे हैं, आरोप की सत्यता तो जांच के बाद और न्यायालय से तय होगी, लेकिन ऐसे आरोप जो लगे हैं वो शर्मनाक हैं, घृणित हैं और बहुत ही चिंताजनक है। Let me also explain to you why the Prime Minister reached out specifically to Mahila voters and held this Mahila rally. This is a powerful vote bank and that could pave the way for the elections in 2024. In 2014 Lok Sabha polls, 12% of women voted for the BJP while 42% voted for the Trinamool Congress. In 2019 polls, however, as many as 38% women voted for the BJP and 47% for the Trinamool Congress. Let's look at the assembly polls in Bengal. In 2016, 10% women voted for the BJP, and then this figure shot up to a whopping 37% in 2021 polls. However, on the pitch of Ma Mati Manus, Mamta Banerjee also managed to increase the women votes from 48 to 50% in the 2021 polls. But what will happen this time around? The key could lie once again in the hands of the women, which is why is Sandesh Khali such a poignant issue in this 2024 elections? That is the legitimate question that we want to ask. Is Mahila vote the key to 2024 Mahabharat?